Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि कृष्ण। हरे कृष्णा भक्ति वृंदा, आपने बहुत ही मधुर स्वर में हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन किया। थैंक यू सो मच डियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के वक्ता के लिए मैं हमारे होस्ट हिज ग्रेस रसिकानंद प्रभु को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। दामोदर देश यात्रा में नित्यम भागवत सेवया में जुड़े हुए सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज हमारे साथ उपस्थित हैं हिज होलीनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज। भक्ति राघव स्वामी महाराज के बारे में थोड़ा परिचय करने में मैं थोड़ा बताता हूँ। महाराज कनाडा में फ्रेंच कैनेडियन रोमन कैथोलिक दंपति का संतान था। महाराज इस्कॉन में 1974 में जुड़े और महाराज का उसी साल में हरिनाम दीक्षा हुई और राघव पंडिता दास से नामकरण हुआ और महाराज 1985 में संन्यास दीक्षा लिया। महाराज पुस्तक भी लिखता है। उनका प्रथम ग्रंथ का नाम ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गुरुकुल एंड पौंडोक पेसेंट ट्रेन, मतलब मुझे लग रहा है एक इस्लामिक और हिंदू गुरुकुल सिस्टम के बारे में। और महाराज इस्कॉन कनाडा में ओटावा, मॉन्ट्रियल, श्रीधाम मायापुर, कोलकाता, इंडोनेशिया और कंबोडिया में भी मंदिर में सेवा किया, इस्कॉन मंदिर में सेवा किया। महाराज महाराज कंबोडिया और इंडोनेशिया में ग्रामीण सामुदायिक परियोजक संघ स्थापित करके नेतृत्व करके इसका प्रगति के लिए प्रयास किया। इसका यहाँ लिखा है एनजीओ कॉल्ड ग्लोबल वर्णाश्रम एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें वो ग्रामीण वर्णाश्रम सिस्टम के लिए महाराज बहुत प्रयास किया। उसका नाम दिया महाराज यशोदापुर आश्रम। तो महाराज अनेक ग्रंथ भी लिखा है। उसमें उनका मुख्य सब्जेक्ट ऐसा है, मेक वृंदावन विलेज और वर्णाश्रम एजुकेशन। और महाराज वर्णाश्रम धर्म को प्रसार करने के लिए अनेक सेमिनार भी दिया है। महाराज का मूड और मिशन वर्णाश्रम धर्म और गुरुकुल सिस्टम को प्रचार करने में। महाराज अनेक देश को ट्रैवलिंग किया करके अनेक प्रसार भी किया। महाराज आइए हम सब मिलकर महाराज को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप कर आमंत्रित करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज, please accept my humble obeisances. Maharaj, you can hear me, Maharaj? Yes, I can hear you, Prabhu. Yes, Maharaj, your voice also is perfect. Maharaj, since you are going to take class in English, Yes. most of the devotees like Hindi. Therefore, Yes. one Prabhu is going to do translation, Maharaj. So you can go up to 7:50, Maharaj. Then there will be 10 minutes question answer session, Maharaj. Yes, no problem. Okay. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna to all the devotees. And welcome to the Srimad Bhagavatam class. We'll begin with a short
kirtan as we normally do. And then this morning we are looking at Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 85, Text 31 to 34. If you like, you can translate that. Hare Krishna Prabhu, Nandakishore Prabhu, are you there for translation? हरे कृष्ण प्रभु प्रभु ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक. Okay, Mataji, can you translate until then? Whether we need this? Yes, because we don't need it now. But if somebody, we don't need it. Turn it off. Yeah. Hartal, Rajanga. If someone has. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Brajadana Randana Yashodanandana Brajadana Randana Jamuna Tira Vanasari Jamuna Tira Vanasari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Brajadana Randana Yashodanandana Brajadana Randana Jamuna Tira Vanasari Jamuna Tira Radha Madhava
Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Radha Madhava Radha Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Gaur Pimanande, Dayam Vishupad Paramahamsa, Pri Vrajga Sajasto Tarasatya Sri Simad, His Divine Grace, Shiraboy Charanarvind Bhakti Vedanta Swami, Sri Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, ISKCON BBT, Founder Acharya's Divine Grace, Sri Prabhupada ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Samaveta Bhakti Vrinda ki, Harinam Sankirtan ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Nityam Gaura Pimanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaisnavam Sham Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakhanditam Scham Hai Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kansana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayat Nasta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhakti Bhavati Naishiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam
Uttamasloka charitam chakara bhagavan rishi nishreyasaya lokasya dhanyam swasayanam mahat. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone may kindly repeat the following two mantras. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinatharanam. Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinatharanam. Hare Krishna. Welcome to all the devotees. We have a dual audience this morning. We have a virtual audience and we have a live audience in front of us. So welcome to all the devotees, and I will allow our translator to kindly repeat, and I will speak as much as possible, short sentences. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. This morning we are hearing from the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 85, beginning with text 31 up to 34. तो ये सुबह हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 85 स्कंद से, और श्लोक संख्या हम देख रहे हैं 31 से लेके 34 तक. So because of the time factor, we will not do as we normally do. I will just read once the Sanskrit and then go immediately to the translation and the purports wherever there are purports in the verses this morning. तो वरना जैसे हम करते हैं समय के अभाव के कारण वैसा नहीं करेंगे. मैं एक बार श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद हम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे उन श्लोकों के जहां पर तात्पर्य भी है. So devotees who are present here can repeat line by line, and those who are listening online can also likewise, since it's on the screen here. तो जो भक्त मेरे सामने उपस्थित हैं वो हर वाक्य के बाद पढ़ सकते हैं, और जो भक्त ऑनलाइन के माध्यम से हैं वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके सामने श्लोक नजर आ रहा है. 31 is the one we will recite, but just once. Yasyam sham sabhagena vishvotpati layodayaha bhavanti kila vishvatmams Tammatvādyāham gatim gata. Translation and purport by disciples of the Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. O soul of all that be, the creation, maintenance, and destruction of the universe are all carried out by a fraction of an expansion
of an expansion of your expansion. Today, I have come to take shelter of you, the Supreme Lord. तो पहले श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हे विश्वात्मा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पालन तथा संहार, ये सभी आपके अंश के अंश के अंश के भी एक अंश द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हे भगवान, मैं आज आपकी शरण में आई हूँ। So just to put everything in context, this is Devaki, Mataji, who is speaking and addressing her son, Lord Krishna. तो सब कुछ सही प्रसंग में एक बार देखने के लिए हम पहले ये क्या चल रहा है वो समझेंगे। तो ये माँ देवकी है, ये अपने बेटे कृष्ण से कह रही है। So purport, Sridhar Swami explains this verse as follows. तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे। श्रीला श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। The Lord of Vaikuntha, Narayana, is but one expansion of Sri Krishna. वैकुंठपति नारायण श्री कृष्ण के केवल एक अंश है। वैकुंठपति नारायण श्री कृष्ण के केवल एक अंश है। Mahavishnu, the first creator, is Lord Narayana's expansion. महाविष्णु जो कि प्रथम सृष्टा है, वे भगवान नारायण के अंश हैं। The total material energy emanates from Mahavishnu's glance, and of that total material energy, the three modes of nature are divided portions. संपूर्ण भौतिक शक्ति महाविष्णु के चितवन से निकलती है और तीनों गुण इसी संपूर्ण भौतिक शक्ति के विभिन्न अंश हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज। Hare Krishna. I think there is some network issue. Hare Krishna. So there is some network issue. Maharaj is trying to reconnect. Please stay on. You can chant Hare Krishna. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Hare Kindly Krishna. excuse. Okay. Can you hear me, Prabhu? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. Welcome. Yes, Maharaj. Kindly excuse the unintended disruption. I'm using a cell phone right now, but I think the same purpose will be served. Let us continue the purport. Yes, Maharaj. I presume you already translated the last sentence I spoke. So I'll just, yeah. Yes, Maharaj. So I'll just finish here. The last line of the purport. Thus it is Sri Krishna acting through his expansions, who generates, sustains, and dissolves the universe. इस तरह अपने अंशों के माध्यम से काम करने वाले श्री कृष्ण ही ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं. Yes. So this is this is actually the beginning of Devaki's prayers to Lord Krishna, and as it is normally done, one begins by glorifying such exalted personalities as the Supreme Personality of Godhead, Krishna. तो ये शुरुआत है, देवकी जी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना कर रही हैं, और ऐसा ही आमतौर पर किया जाता है कि हम एक बहुत महान व्यक्ति और यहाँ तक कि भगवान की भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो शुरुआत कोई गुणगान या उनकी महिमा गाने से करते हैं. Yeah, Mother Devaki actually begins
her prayers to Lord Krishna in the previous verse, which I will read just to further put everything in context. She begins by addressing the Lord as follows. That is text number 29. Sri Devaki said, O Rama, Rama, immeasurable supreme Lord, O Krishna, Lord of all, master of yoga, I know that you are the ultimate rulers of all universal creators, the primeval personalities of Godhead. So she's addressing both Ram and Krishna, Balaram and Krishna. तो माँ देवकी वास्तव में भगवान की प्रार्थना इसके पहले वाले श्लोक में ही करने लगती हैं। भगवान को इस प्रकार से संबोधित करते हुए जो मैं पढ़ूंगा वो श्लोक संख्या 29 में ही देवकी माँ कृष्णा का गुणगान कर रही हैं। उन्हें वो कहती हैं इस श्लोक में कि हे राम, हे अप्रमेय परमात्मा, हे कृष्ण, सभी योगेश्वरों के स्वामी, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों समस्त ब्रह्मांड सृष्टिकर्ताओं के परम शासक आदि भगवान हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वापस नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया, फिर से हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महाराज, वेलकम बैक। Hare Krishna. Hare Krishna, there was an interruption for a few seconds, Maharaj. Yes. So Hare Krishna. Somebody else was translating a few seconds ago, and yes, Maharaj, we read the purport, Maharaj, for sorry, the translation for verse 29. Okay, that's fine. So I will just comment briefly on this verse, and then we will go to the other verses which are slated for this morning. तो मैं इस श्लोक पे थोड़ी सी टिप्पणी करूंगा और उसके बाद हम आज के जो श्लोक हैं उन पर जाएंगे। Yeah. We know actually this pastime is taking place, of course, in Mathura. Krishna has already performed his childhood pastimes in Vrindavan and has come to Mathura to kill Kamsa, and has already also gone to Gurukula and returned. तो हम जानते हैं ये जो भगवान की लीला चल रही है, ये चल रही है मथुरा में, और भगवान ने अपने बाल्य लीलाएं जो वृंदावन में है वो समाप्त कर ली हैं और मथुरा आए हैं कंस को मारने को, और गुरुकुल भी जा चुके हैं। So in a somewhat different mood than Mother Yashoda knows Krishna and relates with Krishna in a motherly way, knowing him, Krishna, baby Krishna, to be her son. तो हम जानते हैं कि माँ यशोदा किस मनोभाव में है, वो जानती है कृष्ण कौन है। वो उस तरीके से कृष्ण से अपना संबंध बता रही हैं एक माँ की तरह, ये जानते हुए कि जो छोटा कृष्ण है वो उनका बच्चा है। She is relating with Krishna in what is called Vatsalya Rasa, motherly affection. तो माँ यशोदा कृष्ण के साथ संबंध बना रही हैं जिसे हम कहते हैं रस को वात्सल्य रस, एक माँ की तरह। She doesn't know
that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. वे ये बात को नहीं जानती हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है. But here we see somewhat of a difference in the Mathura Lila, where, as we are reading this morning, the prayers, we are hearing the prayers of Mother Devaki, who is glorifying Krishna and Balaram as being the Supreme Personality of Godhead. परंतु यहाँ पर हम थोड़ा अंतर देख रहे हैं मथुरा लीला में इस सुबह कि जो माँ देवकी है वो भगवान कृष्ण और बलराम की प्रशंसा और महिमा गा रही हैं इस तरीके से कि जानते हुए कि वे परम पुरुषोत्तम भगवान हैं. And as we will see in the following verses, one of which or two of which we will read, because she knows, she understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, she will be requesting Krishna and Balaram to perform something which is not possible by ordinary human beings. तो आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे कि क्योंकि वो जानती हैं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण और बलराम, तो वे इन दोनों से एक ऐसी विनती करेंगी जो कोई साधारण व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता. So knowing that Krishna is not an ordinary person, of course, even Mother Yashoda knows that Krishna, although she doesn't understand he's God, she and other and Nanda Maharaj and other residents of Vrindavan know that Krishna is someone very special, of course. तो कृष्ण साधारण नहीं है, ये बात माँ यशोदा भी जानती हैं और माँ यशोदा और नंद महाराज और वृंदावन के और सभी निवासी भी ये बात जानते हैं कि कृष्ण कोई विशेष व्यक्ति है. Thank you. Okay, so now we go to text, what is it? 32 to 33. I will just read the translation in English, a line by line translated in Hindi. Again, her request as follows. It said that when your spiritual master wanted you to retrieve his long dead son, you brought him back from the forefathers' abode as a token of remuneration for your guru's mercy. तो वो कह रही हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब आपके गुरु ने अपने बहुत पहले मर चुके पुत्र को वापस लाने के लिए आपको आदेश दिया, तो आप गुरु दक्षिणा के प्रतीक स्वरूप उस पूर्वजों के धाम में वापस ले आए. Please fulfill my desire in the same way, O Supreme Masters of all yoga masters. हे योगेश्वरों के भी ईश्वर, मेरी इच्छा को भी उसी तरह पूरी कीजिए. Please bring back my sons who were killed by the king of Bhoja, so that I may see them once again. कृपया भोजराज द्वारा मारे गए मेरे पुत्रों को वापस ला दीजिए, जिसे मैं उन्हें फिर से देख सकूं. Yes, and I'll just read the translation to text 34. It's slated for this morning. Again, just the English translation. The sage Shukadev said, thus entreated by their mother, O Bharata, Balaram and Krishna employed their mystic Yogamaya
potency and entered the region of Sutala. शुकदेव मुनि ने कहा, हे भारत, अपनी माता द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर कृष्ण तथा बलराम ने अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग करके सुतल लोक में प्रवेश किया. Yes. So actually, two things. As I was reading this text, which are important for us to understand as devotees, that I'll try to explain briefly. तो वास्तव में दो चीजें हैं. जब मैं ये पढ़ रहा था तो जो विशेष बात है हमें भक्त होने के नाते जो समझना चाहिए उनको मैं समझाने का संक्षेप में प्रयास करूंगा. So the first one, as mentioned in text 3, when Krishna and Balaram finished their education at the Swami, requested. Maharaj, sorry, I lost a little bit of, I couldn't hear fully. Okay, it's kind of going around in circles. Can you hear me? Yeah, it's on and off, Maharaj. I'm losing little bit in the middle. बाकी भक्तों को सुनाई दे रहा है पूरा? हरे कृष्ण. नहीं प्रभु. Well, I can only try to repeat what I said. Yeah. Yes, Maharaj. When Krishna and Balaram ended their studies in the Gurukula, इससे मुझे नहीं सुनाई दे रहा है. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. वापस नेटवर्क इशू है. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महाराज. Hare Krishna Prabhu. What's happening? Yes. Continue, Maharaj. There is some network issue, Maharaj. Please continue, Maharaj. Yeah. Okay. So we can switch off the camera of Maharaj so that like a bandwidth can be improved. Hare Krishna. Yeah. Well, I never switched it on. Anyway, yeah, we have switched it off. So we'll try. So the first point is that in the traditional system of Vedic education, which is very different from modern education, there is what is called China. Education is free. However, it is something mandatory, compulsory, that after finishing one's education, one should give voluntarily, but one should give something or do something for the spiritual master or for the teacher. तो हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो जो परंपरागत शिक्षा होती थी और आधुनिक शिक्षा होती थी, इसमें ये फर्क है कि पहले जो ये शिक्षा देने का की प्रक्रिया होती थी वो निशुल्क होती थी और उसके साथ साथ अनिवार्य होती थी. और यहाँ पर ऐसा भी एक परंपरा थी कि जो छात्र पढ़ते हैं वो अपने आप से अपने जो गुरु हैं उनको कुछ भेंट दिया करते थे. Yes. We should not misunderstand. Dakshina is not something that one
can do or not do. It is confirmed actually in the Bhagavad Gita. There's a verse where Lord Krishna is explaining that no yajna or performance should be done unless there is proper remuneration and unless there are proper mantras chanted as well. तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि दक्षिणा कुछ ऐसी चीज है जो हम शायद दें या ना दें तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। भगवद गीता में एक श्लोक है जहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कोई भी यज्ञ या आध्यात्मिक कार्य संपन्न नहीं होता जब तक सही रूप से दक्षिणा नहीं दी गई हो। This is something actually very important for us as devotees to try and understand, because we are very much far away from what is meant to be the actual standard of education. तो ये भक्त होने के नाते हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वास्तव में जो सही स्तर है शिक्षा प्राप्त करने का, उससे हम बहुत दूर हैं। And this can be a reminder. This can be a reminder for us to learn about this system of dakshina, which is a very integral and important part of what is known as Vedic education. तो ये हमारे लिए एक अनुस्मारक बात बन सकती है कि जो दक्षिणा की प्रक्रिया है उसके बारे में हम पुनः स्मरण करें, जो वैदिक शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। Yes, and actually it's very much important context as a society as well, how one is meant to deal with or reciprocate with brahmanas. Sandipani Muni as a teacher is acting as a brahmana, as a teacher, and we have a major challenge actually within our society. If we want to have, and we should, if we want to have devotees acting as brahmanas, as teachers, we must learn the science and the art of actually supporting and providing for their maintenance. तो यहाँ पर ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रसंग में कि हमें समाज में हमें सीखना है कि कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए ब्राह्मणों के साथ। तो यहाँ संदीपनी मुनि ब्राह्मणा की भूमिका में है और हमारे समाज में एक बड़ी चुनौती है, और वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बीच ब्राह्मण रहें और हमें सिखाएं, तो उसके साथ साथ वो इस प्रकार होगा कि वो इस ज्ञान को खुद सीखें और हमें सिखाएं, लेकिन इसके साथ हमें भी देखना होगा कि कैसे इन ब्राह्मणों की रेख देख के लिए हम उन्हें दे सकते हैं कि उनका जीवन चलता रहे। I mentioned in the beginning of the class that I would deal with two subject matters, but the time factor is not allowing for that. So I'll just stick to this first one in connection with education. We as devotees, we as a society, as an international society for Krishna consciousness, we have a great responsibility to deepen our understanding in regards to education, in regards to our interaction with those who are meant to take up the role and responsibility of brahmanas or teachers within society. तो मैंने कथा के शुरुआत में कहा था कि मैं दो विषयों पे बात करूंगा, लेकिन समय कम होने के कारण मैं इस पहले विषय पर ही अधिक बात करूंगा, जो है शिक्षा। तो हम एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हैं, तो यहाँ पर हमें ये बात की जिम्मेदारी लेनी है और ये समझ को और गहरा करना है कि किस प्रकार से हम बर्ताव करते हैं
उनके साथ जो हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जिम्मेदारी उठाते हैं शिक्षक या ब्राह्मण बनने की. Yes, this is very much a part of what we are meant to do as a society. This is very much what Srila Prabhupada, our founder Acharya, wanted us to gradually introduce these standard traditional practices, which are in the context of Vedic education, an integral part of the Vedic culture, which is actually not meant to be changed. Vedic culture is a perfect culture. We refer to it as Sanatan Dharma, and the system of education that we read about in the Shastra is very, very important, not only important, but actually essential part of our Vedic way of life. तो ये हमें एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ होने के नाते आवश्यक रूप से करना है. और शिला प्रभुपाद जी जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं वो इस बात को पुनः स्थापित करना चाहते थे कि वास्तव में जो पारंपरिक तरीका है शिक्षा प्रदान करने का वो कैसे होना चाहिए, और ये वैदिक संस्कृति का एक बहुत मुख्य भाग है और इसे हम बदल नहीं कर सकते क्योंकि ये सनातन धर्म से इसी प्रकार होता आ रहा है कि शिक्षा देने की यही प्रक्रिया है और इसे हम शास्त्र में पढ़ते हैं और एक बहुत ही मुख्य अंग है वैदिक जीवन शैली का. Yeah, we are already at 10 minutes to 8 and there's a short time meant for any possible questions that might be there from our devotees online. I will not take any questions from our devotees on site. तो 8 बजने में केवल 10 मिनट बाकी हैं और हम देखेंगे कि शायद भक्तों के मन में कोई प्रश्न है. तो महाराज जो ऑनलाइन है उन भक्तों से प्रश्न लेंगे. Yeah. It's a very short class and kindly excuse the disruption, but it was beyond your control and beyond my control also. बहुत ही छोटी कथा हुई है और कृपया करके जो कथा में बीच में रोक हुए उसके लिए क्षमा करना क्योंकि ये रोक जो पड़ी वो मेरे और आप हम दोनों के नियंत्रण के परे था. So if there's any question, kindly. Hare Krishna Maharaj, thank you very much for your wonderful class. We were a bit unfortunate because of this network connection. We lost you in the middle. Still, we could hear wonderful transcendental message from you, Maharaj. Thank you so much for that. Now I will request the devotees to come forward and ask some questions. हरे कृष्णा. अभी हम महाराज का मुखारविंद से हम भागवत कथा सुना. किसी भक्त को प्रश्न है तो कृपा करके माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए. हरे कृष्णा. Mic unmute. That's not English. Hare Krishna Maharaj. Dandavat pranam. Your lotus feet. Can you hear me, Maharaj? Go ahead, Prabhu. Yeah. Yes. Yes. My question is. Go ahead. My question is, in this modern lifestyle which we are in, how the varnashram dharma could be established? I mean, it becomes very difficult to, like yesterday also, Maharaj, you were saying going to the forest is one of the element of Vedic living, as you said. But what are the practicalities of establishing in our life? Thank you, Maharaj. Hare Krishna. तो प्रभु जी का यहाँ प्रश्न है कि तो महाराज को धन्यवाद करते हुए प्रभु जी प्रश्न कर रहे हैं कि आपने
हमारे आधुनिक जीवन में आपने कल भी हमें समझाया वर्णाश्रम के बारे में कि हमें इस प्रकार के वन में समुदाय में जाके रहना चाहिए, वैदिक जीवन शैली अपनानी चाहिए। तो इसे हम अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार देख सकते हैं? This is what we could call a very loaded question. Understand? तो It's a very important question, and but it's a very a major question. I'll just briefly comment briefly. तो महाराज कह रहे हैं ये एक ऐसा प्रश्न है जिसे हम बहुत भारी या भरा हुआ प्रश्न कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में इस पे कहूंगा। It's asking the question, Maharaj, we are living in Kali Yuga, we are in the material world. How in the world can we become pure devotees? तो ये प्रश्न इस प्रकार है कि हम पूछते हैं कि महाराज, हम कलयुग में रह रहे हैं और कलयुग में रहते हुए हम कैसे शुद्ध भक्त बन सकते हैं? So in a similar way, we are in Kali Yuga. We are all fallen souls. How we can introduce Varnashrama? So the number one is that it is the request and the injunction of Shastra as well. Whatever is mentioned in the Shastra, whatever is being explained and requested, ordered, I would say, by our founder Acharya, which is in line also with all previous Vaishnava Acharyas, we should understand, even though it seems very difficult, even though it seems possibly even impossible, since it is requested and it is supported in Shastra, it means that it is possible, and we should follow the various directives or instructions given, which are outlined in certain areas more specifically that I'll mention in a few seconds. That's point number one. तो इसी तरीके से ये प्रश्न ऐसे है कि हम गिरे हुए जीव हैं, तो हम कैसे वापस वर्णाश्रम को पुनः स्थापित करें, ये पहली बात है। लेकिन हम देखेंगे कि शिला प्रभुपाद जी इसे कहने के लिए हमें करते हैं, शास्त्र भी हमें आदेश देता है, और शिला प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य ने भी ये आदेश दिया, और उन्होंने जो आदेश दिया वो पहले के आचार्यों से मेल रखते हुए ही दिया है। तो हमें समझना चाहिए कि हालांकि हमें वर्णाश्रम धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए ये शायद बहुत कठिन कार्य लगे या बहुत असंभव कार्य लगे, लेकिन ये संभव है क्योंकि शास्त्र भी इसका वर्णन करता है और आचार्य भी कहते हैं। तो हमें इस विषय में जो भी आदेश मिले हैं शास्त्र के विभिन्न भागों में, जो अब मैं आपको बताऊंगा। It actually begins with Ado Shraddha. If you just read the 9th chapter, text number 3 of the Bhagavad Gita, 9:3, Ashraddha dhana purusha dharma sasya parantapa prapyanam nivartante mritu samsara vartmani. That if one is lacking in Shraddha, if one is lacking in the faith and conviction that is in regards to instructions given by Guru, Sadhu, and Shastra, then whatever one may say, whatever one may do, one will not be successful. So, in addition to Shraddha, of course, I'm just underlining this very important point, because if that is lacking, and in my interaction with many devotees, I sense and observe that it is lacking, unfortunately, then whatever, if that is not there, whatever may be said won't have any effect. तो महाराज जी बता रहे हैं कि भक्ति की शुरुआत होती है श्रद्धा से, अदौ श्रद्धा,
तो अगर हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के 3रे श्लोक को देखेंगे भगवत गीता में, तो श्रद्धा दाना पुरुषस्य धर्मस्य परंतपा, ये जो श्लोक है इसमें हम देखेंगे, तो वहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर किसी को ये श्रद्धा और दृढ़ता की कमी है कि जो श्रद्धा जो गुरु साधु और शास्त्र के आदेशों में होनी चाहिए, यदि वो नहीं है तो वो व्यक्ति फिर चाहे कुछ भी करे, चाहे कुछ भी कह ले, वो हमेशा असफल ही होगा। तो ये यहाँ पर मुख्य बात है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि मैं कभी कभी जब मेरी कोई बातचीत होती है भक्तों के साथ, तो भी मैं ये देखता हूँ कि उनमें ये श्रद्धा की कमी है, और इस श्रद्धा के कमी के कारण से फिर कुछ प्राप्त नहीं होगा। Therefore, in the short time left for our class, I would like to leave the devotees with the following references that can help all of us understand more easily or more clearly this particular major instruction given by Srila Prabhupada in terms of establishing Varnashrama Dharma. Number one, in the Srimad Bhagavatam, Canto number 7, the 5 chapters dealing with the subject matter as given by Narada Muni are absolutely essential. If a householder especially has not read and reread and studied those instructions given by Narada Muni, one will not be able to understand how to actually go about implementing this particular instruction given by Srila Prabhupada. तो जो भी थोड़ा समय अभी कथा में बचा हुआ है, तो उसमें मैं भक्तों को आगे दिए गए संदर्भ कुछ बताऊंगा, जहां पर वो अधिक इस वर्णाश्रम के पुनः स्थापित करने का जो बड़ा आदेश मिला है शिला प्रभुपाद जी द्वारा, उसके विषय में पढ़ सकते हैं। तो पहला संदर्भ है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 5 अध्याय, जहां नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं विशेष करके कि गृहस्थों को कैसे जीवन बितानी है। और अगर आप गृहस्थ हो और आपने इसको नहीं पढ़ा है, या पढ़ने के बाद फिर नहीं पढ़ा है, या अच्छे से नहीं समझा है, तो आप इन्हें देख लीजिए, ताकि क्योंकि ये पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे ये जो वर्णाश्रम का आदेश है इसको हम कैसे अपने जीवन में उतारें। A second very important reference is a book entitled Speaking About Varnashrama, which is a compilation of the most important instructions through purports, conversations, letters, etc., given by Srila Prabhupada on the subject matter of Varnashrama Dharma. तो इसके बाद जो दूसरी पुस्तक है, उसका नाम अंग्रेजी में, वो पुस्तक का नाम है स्पीकिंग अबाउट वर्णाश्रम, वर्णाश्रम के विषय में बात करना। तो ये पुस्तक है, ये एक संकलन है विभिन्न शिला प्रभुपाद जी के महत्वपूर्ण उपदेशों का, जो उन्होंने दिए हैं उनके तात्पर्यों में, उनके कथाओं में, या भक्तों के साथ जो उनकी बातचीत है। तो इस पुस्तक में भी आप वर्णाश्रम के बारे में पढ़ सकते हैं। And the third and last reference that I'd like to leave with our devotees is an essay written by Srila Prabhupada way back in 1956, which is tucked away, hidden in the Veda-based portfolio entitled Gita Nagari. I strongly recommend that devotees read this essay on Gita Nagari, along with what I mentioned before, the book speaking about Varnashrama Dharma and the 7th canto of the Srimad Bhagavatam. Only after reading these particular references or presentations can one begin, I would say, to understand how in a practical way it is possible, very much possible. Not only is it possible, but it is urgently needed as well. And if we don't act on this most important instruction given by our founder Acharya, we will not actually succeed in this mission of spreading Krishna consciousness. तो महाराज जी बता रहे हैं कि
तीसरा और आखिरी संदर्भ जो इस विषय में पढ़ने के लिए है वो ये है, एक इस पर शिला प्रभुपाद जी ने एक निबंध लिखा है जो वेदाबेस में मिलेगा। ये निबंध है गीता नगरी के ऊपर, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। और जो मैंने आपको पुस्तकें दी और जो श्रीमद् भागवतम का संदर्भ बताया, इन तीनों को आप पढ़िए। और इन सबको पढ़ने के बाद आप व्यक्तिगत रूप से ये समझ सकेंगे कि वर्णाश्रम पुनः स्थापित करना संभव है, बिल्कुल संभव है। और उसके साथ साथ केवल संभव ही नहीं, तुरंत ही ऐसा करने की आवश्यकता भी है। और ये जो शिला प्रभुपाद जी का सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, अगर हम इसे सही से पूरा नहीं किए तो जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार करने का जो लक्ष्य है, इसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। And my last brief comment is that if we don't chant our 16 rounds, and if we don't follow the basic rules and regulations as given by our founder Charya, which is especially of importance for those who have taken initiation, we will never be able to understand this instruction. और आखिरी बात यह है कि अगर हम हमारे 16 माला का जप नहीं करेंगे और जो बिल्कुल मूल नियम शिला प्रभुपाद जी हमारे संस्थापक आचार्य ने हमें दिए हैं पालन करने के लिए, अगर हम ये पालन नहीं करेंगे तो हम कभी भी नहीं ये जो वर्णाश्रम का जो आदेश है जो शिला प्रभुपाद जी ने दिया है, इसे कभी भी नहीं समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj, for your wonderful points. Okay. Maharaj, now time is up. Now I would request Sriman Jai Govind Prabhu or Jai Govind Prabhu, are you there? The virtual world. Paramananda Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. I'm there, Prabhu. Yes, Prabhu. You can say a few points about the class and even any announcements or Ghoshana, please. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Maharaj, just you're having a Varnashrama Dharma, you're established a center in Hebri, Karnataka. Would you like to briefly say about that project to all of us, Maharaj? I'd like to say two things. One is that we did begin last year. We established there's a few things. We have actually 3 projects near Hibri in Udupi district. They're all within Udupi district. One was established some 15 years back, actually, called SSKBK, Saidri Sri Krishna Balaram Kshetra. And maybe 7 years back, we established another project under the name Sayadri Goloka Dham. And it is within that Sayadri Goloka Dham, which is just 1 kilometer away from the original project where we established last year the Sayadri Parasharam Gurukula. And more recently, actually at the beginning of these, I purchased some land to establish a community that it's very new. Most people don't know about it. The name of that community is Gita Nagari. So these, on 40 acres of land, these different activities area can take advantage of the presence of Udupi Krishna to get his blessings and can visit our center as well. In addition to that, there's a very important project connected with Varnashrama, which since 1 year I've been concentrating on Mayapur, and that is called Varnashrama College. I didn't get a chance to speak on that, but that's very important, similar to the importance of Gurukula. Srila Prabhupada wanted that we also establish Varnashram colleges, and I apologize if anyone is translating all of this.
So, Maharaj, by your mercy, we will try, Maharaj. So, please bless Maharaj so we can translate. Hare Krishna. तो महाराज कह रहे हैं कि श्री जय गोविंद प्रभु जी ने महाराज से प्रश्न पूछा कि जो कर्नाटका में हिब्री में जो वर्णाश्रम के ऊपर समुदाय बने हैं उनमें कुछ कहने के लिए। तो महाराज कह रहे हैं कि ये पिछले साल में शुरू किया है और कुछ चीज कहना चाहेंगे कि हिब्री में उडुपी में 15 साल से ये हमारे समुदाय वर्णाश्रम के विषय में चलते आ रहे हैं। तो पहला है सिबरी श्री कृष्ण बलराम क्षेत्र, वहां पर है। फिर हमने किया सायद्री गोलोक धाम, और फिर इसके 1 किलोमीटर में ही जो हमारा मूल कार्यक्रम हम कर रहे थे वहां हमने बनाया है सयद्री परशुराम गुरुकुल। तो यहाँ पर भक्तों ने काफी जमीन खरीदी है और इन समुदाय के कार्य में लगे हुए हैं। और अब जो हम काम कर रहे हैं जो समुदाय बनाने में, उसका नाम है गीता नगरी। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये 40 एकड़ जमीन है हमारे पास। तो आप आ सकते हैं वहाँ उडुपी में और इन वर्णाश्रम के जो समुदाय चल रहे हैं इन्हें देख सकते हैं और उडुपी के कृष्ण की भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस कार्य में अब हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो है जिसे हम पूरा नहीं कर पाए हैं उतनी तेजी से, वो है श्रीधाम मायापुर में वर्णाश्रम विश्वविद्यालय बना रहे हैं। तो ये विश्वविद्यालय हमारे गुरुकुल के तरह ही है और बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर भी मायापुर धाम में कार्य चल रहा है। Congratulations, your translation. By your mercy, Maharaj. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhu. And thank you to all the devotees. Thank you, Maharaj. Thank you, Prabhu. Yes. It's all of us. Yeah. Oh, मैं परमानंद कृष्ण प्रभु को आमंत्रित करता हूँ कुछ शब्द बोलने के लिए। Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Thank you so much for accepting our request and giving us such a wonderful class, Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Maharaj, you can turn on your video now. We can have a darshan, Maharaj. Okay. Okay. Yeah. Okay. Hare Krishna. So thank you to all the devotees. Maharaj, before ending, we will have prayers, Maharaj. Yes, we need them. अभी प्रार्थना का समय है। Go ahead. यस महाराज। महाराज का अच्छा स्वास्थ्य के लिए और आज 3 लोगों का प्रेयर का रिक्वेस्ट किया। सुमित्रा माता जी का अच्छा स्वास्थ्य के लिए और शैला मेहरा माता जी का अच्छा स्वास्थ्य के लिए और अशोक मूल चंदानी प्रभु मतलब असीमानंद प्रभु का आज जन्मदिन है। इनके साथ हमारे सबका आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Thank you so much, Maharaj. We would like to hear from you again and again. Please bless us. Thank you. The permission of you, Maharaj, we wanted to end the class. Yes. नंद किशोर प्रभु चैट में भी एक प्रश्न आया है। अगर आई थिंक समय नहीं होगा बट जस्ट चैट में एक प्रश्न आया है। तो कॉपी कर लीजिए नंद किशोर प्रभु, कॉपी कर लीजिए, कल पूछ लेंगे महाराज। Our special thanks to Nanda Kishore Prabhu for his wonderful translation.
नंदकिशोर प्रभु बहुत धन्यवाद, आपका ट्रांसलेशन सुंदर था। महाराज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं नंद आपका कृपा से प्रभु जी। हरे थैंक कृष्णा। यू। Okay. हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज। His Holiness Bhakti Raghava Swami Maharaj ki jai. जय। Okay. हरे कृष्णा। Okay. We're signing off here. हरे Yes. कृष्ण।